हाय बच्चों, कैसे हो? चलिए आज हम हट के थोड़ा सब्जेक्ट करते हैं, वो है साइंस वन। साइंस वन में जो चैप्टर्स है, दैट फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डू इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में एक टॉपिक लेंगे, उसका नाम है केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ बेसिकली किसके बारे में है? प्लैनेटरी मोशन के बारे में। प्लैनेटरी मोशंस, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। एंशिएंट टाइम से, काफी पहले से लोगों को एक उत्सुकता थी, एक्साइटमेंट था कि किस प्रकार से सारे प्लैनेट्स जो है यहाँ पे यूनिवर्स में किस प्रकार से रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो उन्होंने, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया, है ना। बिफोर गैलीलियो, गैलीलियो के पहले लोगों ने क्या था, जो भी ऑब्जर्वेशन किया वो सिर्फ देख करके किया, नेकेड आई से किया। तो यहाँ पे केप्लर्स भी थे, तो केप्लर्स ने भी क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशन को उन्होंने काफी सालों तक प्लैनेट्स को देखा, सन को देखा कि किस प्रकार से ये प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने ऑब्जर्वेशन करने के पश्चात कुछ कंक्लूजन निकाला, उसको उन्होंने नाम दिया लॉ के रूप में, उसको जो हम जानते हैं केप्लर्स लॉ। तो केप्लर्स लॉ जो है, कुछ दो तीन लॉज हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, 16th सेंचुरी के में बहुत सारे जो डेटा थे तब तक अवेलेबल हो चुके थे, उन्होंने इसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो उन्होंने लॉ बनाया, वो लॉ इस रूप में दिया, वो हम उसको जानते हैं केप्लर्स लॉ। तो दिस इज योर केप्लर्स फर्स्ट लॉ। तो केप्लर्स फर्स्ट लॉ जो था, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि जो प्लैनेट्स हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द सन। these planets, these revolve around the sun in a fixed path, but not in a circular orbit, not in a oval shape, but in a elliptical path. तो अब देखने वाले कि व्हाट इज दिस एलिप्टिकल पाथ, एलिप्स होता क्या? सबसे पहले हम थोड़ा एलिप्स देखेंगे, उसके बाद आगे का बात करेंगे, राइट। सो he said that planets revolve around the sun in an elliptical orbit. So what is an ellipse? When you take a cone, when you take a cone, इस प्रकार एक कोन ले लो, इस कोन को एक प्लेन से, एक इंक्लाइंड प्लेन से इस प्रकार कट करो। इंक्लाइंड प्लेन से क्या करो, इस प्रकार से कट करो। तो यहाँ पे जो शेप निकलता है, जो कर्व निकलता है, दिस कर्व इज इन ओवल शेप, नॉट इन ओवल, सॉरी, इट इज एन एलिप्स। दिस कर्व इन एन एलिप्स, ये एलिप्स कहलाता है, राइट। तो इस एलिप्टिकल पार्ट में, एलिप्टिकल पाथ में जो है प्लैनेट जो है रिवॉल्व करता है। तो बट इस एलिप्स के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। दीज आर द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन द लॉज, तो इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो व्हाट इज एन एलिप्स और एलिप्टिकल पाथ? एलिप्स, राइट। See this ellipse. This is something like this. As I told you, it has got two focal points, f1 and f2। इसमें दो फोकल पॉइंट होता है, f1 एंड f2। और क्या होता है, टू फोकल पॉइंट्स होने के बाद see, it has got two focal points, and also the sum of the distances of the two focal points, sum of the distance from the two focal points from the every part of the curve, they are constant. For example, when you take different points on the curve, is suppose this is your a1 a, this is your b point, and we are taking c points. See, what is the distance? Suppose this is the distance from focal point 1, af1, join this af2, right. Similarly, join this f1 from b points, and also you have to join it b to f2. And one more thing is there, this also you can join it, c f1 to c and c to f2. The sum of the distances, like when you see this, a f1
distance from A to F1, that is AF1 plus AF2 is equal to BF1 plus BF2. These are constant. Similarly, third point also we have taken, that is C. Here we have taken C. So this will be equal to CF1, you are right, plus CF2, right? So here this is an ellipse. It is equal to two focal points, that is two foci F1 and F2, and sum of the distances to the two focal points from every point on the curve, they are constant, right? So this is an ellipse. So now we are turning to the first law of Kepler's, that is Kepler's first law of motion. Because this is the term ellipse, elliptical path will come in the law, that's why we have studied it. चलो देखते हैं कि केपलर्स का पहला लॉ क्या है. केपलर्स जो पहला लॉ है, this is about the orbit of the planets, with the revolution of the sun. That is, the orbit of a planet is an ellipse with the sun as one of the foci, right? कहता है, we are going to write it. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. This is the first law of Kepler's first law of motion, right? तो कहता है कि if this is an elliptical orbit of the planet, this is your first focal point, as I told you, this is your first, second focal point. If this is a planet, right, it revolves around the sun. In an elliptical orbit with the sun at one of its focal point, whether the sun will be at F1 or it will be at F2. So this is your first law of motion, Kepler's first law of motion. Now we are moving to the second law of Kepler's second law of motion. Kepler's second law. देखो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि यहां पर if the sun is at the second focal point, right, if this is the sun, over here S, and this is your planet, this planet is at A position, right, and the line joining the planet and the sun is like from A to S. The lining joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. For example, if the planet is at initial position A and also initial position A, so after certain time it reaches to position number like at B. So it covers certain area. This is an area. At the same time, suppose when the planet was at position A, जब planet A position पे था, उसी समय suppose ये planet यहाँ पर है C position पे, तो आफ्टर सर्टेन टाइम, फिक्स टाइम पे वो जब B पे आता है ना, जब वो कहाँ पे आता है, B पे आता है, तो उसी समय ये यहाँ पर कहाँ जाएगा, C से D पे जाएगा. इसका मतलब ये हुआ
इनटू साइमल्टेनियस केस में हम देख रहे हैं कि अगर प्लैनेट ए पोजीशन पे है एक केस में, दूसरे केस में सपोज ये सी पोजीशन पे है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद वो बी पे आता है, ए से बी पे आता है, उसी समय क्या है, सी से कहां पे आएगा, डी पे आएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पर एरिया कवर करेगा वह एरिया यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, है ना। एक और ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज ऐसे ले लिया आपने, है ना, ए बी सी डी ई और एफ। जो यहाँ पे टाइमिंग है, जो यहाँ पे टाइमिंग है वो टाइमिंग यहाँ पर, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगी, इसका भी कॉमन हो जाएगा। मतलब सपोज इफ दिस इज योर सन, ए एस बी, area of A as B will be equal to area of C as D will be equal to area of क्या हो जाएगा, E as F, है ना। सो इस सेकेंड लॉ कहता है, केपलर का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द लाइनिंग ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपका ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। कैसे लिखेंगे इसे, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ज्वाइनिंग द planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time। यह है केपलर्स सेकेंड लॉ। ये क्या था, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, ये केपलर्स लॉ फर्स्ट लॉ था, यह सेकेंड लॉ। नाउ वी आर मूविंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ। तीनों नियम उन्होंने बनाया था, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, ये है आपका जो टाइम पीरियड है ना, मतलब सन के चारों तरफ जो एलिप्टिकल पाथ में जो प्लैनेट आपका रिवॉल्व करता है, एक रिवोल्यूशन लेने के लिए जो समय लगता है उसको आपको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड one period of revolution, it is called period of revolution, ठीक है। and suppose as I told you there are two foci, f1 and f2, where the sun remains either at f1 or at f2, या तो f1 पे रहेगा या तो f2 पे रहेगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है सन से और जो प्लैनेट का डिस्टेंस होता है, कहीं कम होता है, कहीं क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका मीन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा और कम को ऐड करने के बाद जो डिवाइड करके जो एवरेज निकलता है, दैट इज कॉल्ड मीन डिस्टेंस। ओके, सो थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ इज बेसिकली द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड द मीन डिस्टेंस। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो हमने बोला एंड द मीन डिस्टेंस। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या मैंने बताया था, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। सो दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जहां पे टी क्या है, इट इज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड आर is the mean distance. R is the mean distance between planet and the, we have planet and the sun, planet and the sun, ठीक है। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मीन्स what is t square, t is the period of revolution. So you can say that the square of the period of revolution, देखो, the square of period of revolution is directly proportional to the
क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। थर्ड लॉ इज डन। इतना ही है। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर व्हेन यू, जब आप इसको रिमूव करोगे तो इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा, देन इट इज आर क्यूब, वेयर के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा। फिर के यहीं पे रख दो, आर क्यूब इधर लेके आओ, तो इट विल बी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। द रेशियो ऑफ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यह है केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस प्रकार से हमने केप्लर्स के तीनों लॉ के बारे में पढ़ी। केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो किसके बारे में था, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोसाई। सेकंड क्या बोलता है केप्लर्स सेकंड लॉ, द लाइनिंग ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है इसका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, दिस पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, उन दोनों के रिलेशन में है। सो स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर लिखा ना, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द आर, आर मीन्स मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। बस ये तीनों लॉज है, आप कर लो, ये 3 मार्क्स से आते हैं, ठीक है। इसको ट्राई करो, बार बार करो, समझो, लिखो, पढ़ोगे तो आ जाएगा। ओके बेटा, आशा है समझ में आया होगा। थैंक यू, बार बार देखिए इसको।